हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो तीन हम लोग का असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट पी टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस विथ प्रूफ। तो पी टेस्ट क्या है, उसका थ्योरम जो है, पहले थ्योरम हम लोग लिख लेते हैं। थ्योरम है द सीरीज 1 by 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus dot 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 plus 1 by n to the power p plus up to infinite is convergent if p greater than 1। मतलब p का वैल्यू 1 से ज़्यादा, सपोज 3/2, 2, कोई भी ऐसा एक से ज़्यादा कोई भी वैल्यू होगा, देन इट इज़ कन्वर्जेंट, राइट। एंड divergent if p less than 1, right, लेस देन इक्वल टू 1। तो उसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? प्रूफ डिनोट द सीरीज। ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है, पहले हम लोग फाइनाइट टर्म एज्यूम कर लेंगे, राइट। ये टोटल सीरीज को हम लोग एस से डिफाइन कर लेंगे। डिनोट द गिवन सीरीज, डिनोट द गिवन सीरीज बाई एस मतलब साम, क्योंकि ये साम हो रहा है, सीरीज एस। नाउ सिंस एस इज ए सीरीज of positive terms, क्योंकि 1/1 p का कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली 1/2 p इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जितना भी नंबर है, जितना भी टर्म है, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। पॉजिटिव टर्म्स, its convergence or divergence is not affected by grouping the term right, in brackets in any way we place। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, इसको हम लोग सपोज पेयर 2, 3 ऐसे करके ब्रैकेट करके अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसमें टोटल जो साम है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। जैसे 2+3+4, तो 2 और 3+4 अलग से हम लोग लिख के प्लस करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, राइट। तो 3 केस हो सकता है p का वैल्यू का, एक p ग्रेटर देन 1, दूसरा p लेस देन 1 और तीसरा p इक्वल टू 1। तो पहला टर्म जो है p ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग केस के लिए प्रूव करेंगे। तो केस 1, राइट, लेट p ग्रेटर देन 1। p जब एक से ज़्यादा है तब क्या है, p जब एक से ज़्यादा है तब कॉन्वर्जेंट होता है, तो वी हैव टू प्रूव दिस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को ग्रुप में फॉर्म करेंगे। वी ग्रुप द टर्म्स एज फॉलोज,
we group the terms as follows. कैसे टर्म हम लोग ग्रुप बना रहे हैं? एज फॉलोज, जैसे 1 प्लस उसके बाद दो टर्म, फर्स्ट टर्म एक ही रहेगा फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप पे दो टर्म लेंगे 3 टू द पावर p, उसके बाद चार टर्म लेंगे दैट इज 1/4 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p प्लस 1/6 टू द पावर p प्लस 1/7 टू द पावर p प्लस ऐसे करके हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, राइट? that is we group the term we group the term we group the term we group the term in such a manner in such a manner such a manner that the first term that the first term in the brackets are in the brackets are क्या क्या है? फर्स्ट टर्म 1/2 टू द पावर p कॉमा 1 फर्स्ट टर्म जो है ये, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 टू द पावर 4 टू द पावर p को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2p, तो 1 इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 टू द पावर 2p। सिमिलरली इसके बाद 1/8 टू द पावर p फर्स्ट टर्म होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 3p एंड सो ऑन, राइट? comma so on etc, and the brackets are contained and each brackets contain each brackets contain कितना 2 4 6 टर्म्स ऐसे करके टर्म है, ठीक है? ओ सॉरी 2 4 8 ये ऑर्डर में आ रहा है 2 4 8 सॉरी 2 4 8 डॉट 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 टर्म्स रेस्पेक्टिवली। नाउ हम लोग एक इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p, क्योंकि 1/2 टू द पावर p डेफिनेटली 1/3 टू द पावर p से बड़ा है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 टू द पावर p that is 1/2 to the power p minus 1। सिमिलरली नेक्स्ट जो चार टर्म, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसका जो टर्म है दैट इज 1/4 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p प्लस 1/6 टू द पावर p प्लस 1/7 टू द पावर p लेस देन फर्स्ट जो 4 टू द पावर p उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2p, नेक्स्ट टर्म को भी 1/2 टू द पावर 2p से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद 2 टू द पावर 2p प्लस 1/2 टू द पावर 2p दैट इज 4/2 टू द पावर 2p, इट इज 1/2 टू द पावर 2 इंटू p माइनस 1, क्योंकि 4 मतलब 2 स्क्वायर तो माइनस हो गया ये। सिमिलरली उसके बाद ऐसे ऐसे करके लास्ट नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा 8 टू द पावर p 9 टू द पावर p 10 टू द पावर p करके लास्ट होगा 1/15 टू द पावर p, और उसको भी हम लोग सेम ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा 1/2 टू द पावर 3 इंटू p माइनस 1, राइट? एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड में जो मिल रहा है इसका सीरीज जो है इसका समेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है इसका टोटल सम करेंगे इंक्लूडिंग 1, दैट इज thus we have
thus we have 1 plus 2 to the power p plus 3 to the power p plus 4 to the power p plus dot 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 plus 1 by n to the power p plus up to infinite लेस देन फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट जो पेयर है 2 टू द पावर p और 3 टू द पावर p उसको रिप्लेस कर देंगे 2 टू द पावर p माइनस 1 से, उसके बाद 1 बाई 2 टू द पावर 2p माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 to the power 3 into p minus 1 and so on up to infinite। तो एक जीपी है, जीपी के सारा है और इसका जो है ये जीपी सम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लेस देन, ये टोटल जो सम है उस कॉमन रेशियो क्या है 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1 and 1 by 2 to the power p minus 1 is less than unity। ठीक है, now the series is a GP सीरीज, ये जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, राइट, whose common ratio क्या है, कॉमन रेशियो 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1, राइट, which is less than 1, right, less than 1 since p greater than 1, hence the series is convergent, क्योंकि जीपी सीरीज में, जीपी इनफाइनाइट जीपी सीरीज में जब आर का वैल्यू लेस देन 1 है देन सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो इनफाइनाइट जीपी सीरीज मिल रहा है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज में जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1, सिंस p पॉजिटिव तो 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1 डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, hence we can say that series is convergent for p less than p greater than 1, right। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे p when p इक्वल टू 1, p जब 1 है तब सीरीज का फंक्शन क्या आ रहा है, केस 2 आ जाएगा, केस 2, राइट, केस 2 लेट p इक्वल टू 1, सपोज हम लोग एज्यूम करें p इक्वल टू 1, सो द सीरीज सम एस इक्वल टू क्या होगा, p के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई n प्लस अप टू इनफाइनाइट, राइट। इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे सेम फॉर्म में जैसे हम लोग लास्ट मैथ पोर्शन में लिखे थे, दैट इज 1 प्लस, इसमें थोड़ा चेंज कर लेंगे ऑर्डर, 1 बाई 2 उसके बाद 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 उसके बाद 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 8 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें हम लोग लीस्ट टर्म माने लास्ट जो टर्म है एक एक ब्रैकेट में उसको कंसीडर करें, जैसे ये 1 बाई 2 स्क्वायर है, ये 1 बाई 2 क्यूब है, राइट। तो लीस्ट टर्म लास्ट टर्म जो है ब्रैकेट का उसको हम लोग कंसीडर करें, where the last terms in the brackets are as follows, are क्या फॉर्म में आ रहा है, 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन, राइट, etc. and the brackets contain
कॉन्टेन फर्स्ट ब्रैकेट में कितना, ये ब्रैकेट को हम लोग कंसिडर, पहला दो टर्म को नहीं एज्यूम करें। फर्स्ट ब्रैकेट में दो टर्म, सेकेंड ब्रैकेट में चार, तीसरा ब्रैकेट में 8 टर्म, यही ऑर्डर में आ रहा है रेस्पेक्टिवली। राइट, तो एक एक ब्रैकेट में ऐसे ऑर्डर में 2 4 8 फॉर्म में आ रहा है। ये भी एक जीपी फॉर्म में आ रहा है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। राइट, तो हम लोग अभी रिप्लेस करेंगे 1/3 प्लस 1/4 को ग्रेटर देन मिनिमम टर्म से, दैट इज 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो दैट इज 2/2 स्क्वायर, that is 1/2. Right, similarly 1/5 plus 1/6 plus 1/7 plus 1/8, that is 1/2 2 cube plus 1/2 cube plus 1/2 cube plus 1/2 cube, that is 4/2 cube. 4 मतलब 2 square, तो that means 1/2, it is also 1/2. Right, and so on, मतलब 1/9 plus 1/10 करके 1/16, it is also greater than half, हाफ से बड़ा है। तो जो सीरीज बन रहा है, जो सीरीज है लेफ्ट हैंड साइड में, जो सीरीज है दैट इज एस, लेफ्ट हैंड साइड का सब टर्म प्लस कर देंगे, देयरफॉर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, greater than 1 plus half plus and so on. Right, तो greater than this. Now the series is divergent. ये जो राइट हैंड साइड में सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर एज लिमिट इंटेंसिटी इसका वैल्यू जो है एक से ज़्यादा है, तो इट इज जो है कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। राइट, राइट हैंड साइड में, तो द सीरीज is greater than this, so the series is divergent. The series 1 plus half plus 1/2 plus and so on is divergent। ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट है, हेंस 1 plus half plus 1/3 plus 1/4 is also divergent, तो P ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग प्रूव किए कॉन्वर्जेंट, P इक्वल टू 1 के लिए we have to prove, we already proved that it is divergent. Now we have to prove the series is divergent when P less than 1. Case 3, that is case 3. Case 3, let P less than 1, then 1/n to the power P, that should be greater than 1/n, hence 1/1 to the power P plus 1/2 to the power P plus 1/3 to the power P plus and so on, greater than 1 plus half plus 1/3 plus and so on। इनइक्वालिटी रिप्लेस करके ऐसे हम लोग को मिला है, बट वी हैव प्रूव्ड दैट केस टू में हम लोग प्रूव कर चुके कि 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 इज डाइवर्जेंट, हेंस ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है। since it is already proved that 1 plus half plus 1/3 plus so on is divergent, hence 1/1 to the power P plus 1/2 to the power P plus 1/3 to the power P and so on is divergent
is divergent for n for p p less than 1, right? Divergent, hence proved, hence proved, hence proved. तो पी टेस्ट का थियोरम जो है यहाँ तक प्रूव है, हो गया। मतलब पी ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कॉन्वर्जेंट, पी लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कॉचीज रूट टेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज कॉचीज रूट टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव कॉचीज रूट टेस्ट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट and prove Cauchy's root test। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? स्टेटमेंट थ्योरम let un be always positive, let un be always positive, right, and let un be always positive and limit n tends to infinity nth root of un equal to L, suppose, right? Then three cases arise, right? Number 1, if L less than 1, summation of un is convergent, right? Number 2, if L greater than 1, then summation of un is divergent, right? Or number 3, if L equal to 1, नंबर 3 में क्या है? if L equal to 1, the test fail, मतलब we cannot predict whether it is convergent or divergent, मतलब convergent होगा कि divergent होगा हम लोग predict नहीं कर सकते, right? तो फर्स्ट जो है L लेस देन 1 के लिए हम लोग पहले शो करेंगे whether it is convergent or divergent, proof। Number 1, let L less than 1, right? L less than 1, since L less than 1, we choose epsilon greater than 0 such that L plus epsilon less than 1। हम लोग एक एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर एज्यूम कर रहे हैं which is positive, but L plus epsilon less than 1, right? तो L plus epsilon को हम लोग R से डिनोट करेंगे। let L plus epsilon जो टर्म है उसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। let L plus epsilon equal to smaller, right? smaller less than 1 and 0 less than r less than 1, क्योंकि L plus epsilon 1 से छोटा है then it should be less than 1 and it is positive, क्योंकि L plus epsilon जो है हम लोग इसका वैल्यू जो r एज्यूम किए it should be positive। since limit n tends to infinity nth root of un equal to L, then for any positive integer m, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि mod of
nth root of un minus l less than epsilon, right? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n m से ज़्यादा है तो इसको हम लोग मॉड्यूलस को ब्रेक कर देंगे तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन nth रूट ऑफ un लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. This implies l minus epsilon whole to the power n less than un less than l plus epsilon whole to the power n, right? तो l प्लस n एप्सिलॉन जो है राइट हैंड साइड का जो इनइक्वालिटी हम लोग लास्ट पार्ट जो है टेकिंग लास्ट पार्ट इनइक्वालिटी, लास्ट पार्ट मतलब ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट इनइक्वालिटी we have un less than r to the power n, ठीक है, un लेस देन r टू द पावर n वेयर क्यों ना r का वैल्यू वेयर r इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ जो द सीरीज ये जो r टू द पावर n का जो सीरीज है इसको ये जीपी सीरीज है, राइट? द सीरीज r to the power m plus r to the power m plus 1 plus dot 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 is a GP series, is a series of GP series मतलब infinite GP series, ठीक है, with common ratio with common ratio r लेस देन कॉमन रेशियो r लेस देन 1. तो जब जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो r का वैल्यू 1 से कम होता है देन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, राइट? हेंस द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट hence the series is convergent and hence the series is convergent, right? Hence therefore by comparison test में क्या है कि कोई भी सीरीज सपोज डोमिनेट कर रहा है वो कॉन्वर्जेंट है देन लोअर जो पार्ट है राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी ग्रेटर देन टाइप का लेस देन un लेस देन rn, तो rn जो कॉन्वर्जेंट होगा देन un शुड बी कॉन्वर्जेंट. तो बाय कंपैरिजन टेस्ट um plus 1 plus dot 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 is convergent. जब ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है देन वी कैन से summation of un is also convergent, hence summation of un is also convergent, राइट? नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे कि l ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज इज डाइवर्जेंट. मतलब सेकेंड स्टेप में हम लोग आएंगे केस टू में कि let l greater than 1 since l greater than 1 there exist epsilon greater than 0 such that जैसे लेस देन के लिए हम लोग
एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन कंसीडर किए थे, ग्रेटर देन के लिए हम लोग एल माइनस एप्सिलॉन लोअर बाउंड का पार्ट कंसीडर करेंगे, एल माइनस एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम लोग उसमें एल प्लस एप्सिलॉन को स्मॉल आर एज्यूम किए थे, इसमें एल माइनस एप्सिलॉन को कैपिटल आर एज्यूम करेंगे। लेट एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल आर, राइट, एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल आर greater than 1, right, capital R should be greater than 1। सेम टेक्निक से करेंगे, उसमें भी जैसे लिमिट का वैल्यू लिए थे। नाउ लिमिट एल टी लिमिट n टेंस टू infinity nth root of un equal to L, this implies mod of u nth root of, that is we can say ऐसे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, un nth root of un minus L less than epsilon for all values of n greater than equal to m। सपोज m एक वैल्यू है उससे ज़्यादा है, राइट, तो इनइक्वालिटी जो ये मॉड्यूलस ब्रेक कर देंगे तो वी गेट एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन nth रूट ऑफ un लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग लास्ट टू इनइक्वालिटी कंसीडर किए थे, इसमें फर्स्ट टू इनइक्वालिटी, मतलब ये जो पार्ट है ये फर्स्ट टू इनइक्वालिटी हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, राइट। टेकिंग फर्स्ट टू इनइक्वालिटी, taking first to inequality we have L minus epsilon less than nth root of un, that means L minus epsilon whole to the power n less than un, that is r, this implies r to the power n less than un for all values of n greater than equal to m and r equal to L minus epsilon, right। जो un जो है, since we find that un does not tend to 0, un कभी भी tend to 0 नहीं होगा, क्योंकि rn जो है rn it is greater than 1, r greater than 1, तो आर एन मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो यूएन कैसे, यूएन उससे ज़्यादा है तो यूएन शुड नॉट बी 10 to 0। we find that un does not tend to 0 0 कभी भी नहीं हो सकता, हाँ, hence summation of un is not convergent, मतलब un convergent नहीं है, but it is positive term series, thus un should be divergent, it cannot be 0 नहीं होगा, but it is positive term series, and so summation of un is divergent, इसका मतलब समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट कभी भी नहीं होगा। अभी हम लोग लास्ट पार्ट जो है n इक्वल टू, जब l का वैल्यू 1 है,
देन टेस्ट फेल, उसको प्रूव करेंगे। मतलब केस 3, लेट एल इक्वल टू 1, let L equal to 1, then UN। तो इसको कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, एक एग्जाम्पल, वी प्रूव this part by taking an example, एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग प्रूव करेंगे। लेट यू एन इक्वल टू 1/n, यू एन एक सीरीज हम लोग ले रहे हैं, लेट यू एन इक्वल टू 1/n। let us see what we get, let un equal to 1/n, right? Therefore nth root of un, that is 1/n whole to the power 1/n, right? That is 1/n to the power 1/n. Now limit n tends to infinity, nth root of un, that is 1 by limit n tends to infinity, nth root of 1/n. Now n tends to infinity, that is 1/n, 1/n tends to 0, right? Then we get equal to 1. तो कॉन्वर्जेंट होने के लिए इट शुड बी 0, ये 0 होना जरूरी है, लिमिटिंग वैल्यू, देन इट इज कॉन्वर्जेंट वी कैन से। सिंस इट इज नॉट 0, देयरफॉर summation of un is divergent, therefore summation of 1/n is divergent। ठीक है, thus we can say that this is summation of un is divergent। तो n, for n l equal to 1, the series is divergent। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो उसका डिस्कस करेंगे। स्टेट एंड प्रूव डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट एंड प्रूव डी-एलम्बर्ट्स, डी एपोस्ट्रोफी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो फर्स्ट कॉचीज रूट टेस्ट में क्या है, रूट टेस्ट, इसलिए क्योंकि उसमें एक रूट ओवर कॉन्सेप्ट था। इसमें रेशियो मतलब दो टर्म का रेशियो फॉर्म में आएगा, तो इसलिए डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसका थ्योरम क्या है, थ्योरम let summation of un, let un greater than 0, that means पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, and limit n tends to infinity un by un plus 1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो, it should be equal to l, then number 1, if l greater than 1, summation of un is convergent, right? Number 2, if l less than 1, summation of un is divergent। Number 3, if l equal to 1, टेस्ट फेल। ठीक है, l जब 1 है देन इट इज टेस्ट फेल। तो पहले हम लोग l ग्रेटर देन 1, केस नंबर 1 के लिए हम लोग शो करेंगे। तो प्रूफ नंबर 1, let l
ग्रेटर देन 1, राइट। सेम तरीके से हम लोग एल वही एप्सिलॉन ए कैसे एज्यूम करेंगे, that there exist and there exist epsilon greater than 0 such that there exist epsilon greater than 0 such that L minus epsilon greater than 1, right। L minus epsilon greater than 1। नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, उसको एक दूसरा नंबर से एज्यूम किए थे। लेट r equal to L minus epsilon, that is greater than 1, right। Now since limit n tends to infinity, un by un plus 1 equal to L, then for any m we have un mod of un divided by un plus 1 minus L less than epsilon for all values of n greater than equal to m, right। तो ये जो मॉड्यूलस पार्ट इसको ब्रेक कर देंगे इनइक्वालिटी में, तो वी हैव एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन un बाई un प्लस 1 लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम लोग इसमें कौन सा इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। और n का वैल्यू m से ज़्यादा, m और m से ज़्यादा वैल्यू कंसीडर करेंगे। टेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, we have inequality and putting n equal to m plus 1 and so on, ने फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी कंसीडर कर रहे हैं और n की जगह पे m प्लस 1 ऐसे करके एक एक बार रिप्लेस करके क्या मिलेगा, हम लोग थोड़ा रिवर्स करके लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, दैट इज um बाई um प्लस 1 ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्या मिलेगा, um प्लस 1 बाई um प्लस 2 ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड सो ऑन, ऐसे करके लास्ट में हम लोग कितना तक, इसको p तक, सपोज p तक कंसीडर कर रहे हैं, पूरा नहीं p तक, क्योंकि इन्फिनिट है, हम लोग p तक कंसीडर कर रहे हैं। देन वी हैव लास्ट में सॉरी p माइनस 1 तक कंसीडर करेंगे इसको, p माइनस 1 तक, p माइनस 1। देन लास्ट टर्म क्या मिलेगा, n की जगह पे p माइनस 1 कंसीडर करेंगे तो u p माइनस 1 बाई यू पी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो जितना भी है मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मतलब लेफ्ट के साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड के साथ राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाइंग the corresponding sides we have um, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये बचेगा, ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन होल टू द पावर p माइनस m, राइट। तो इसको हम लोग एल माइनस एप्सिलॉन की जगह पे r से रिप्लेस करके और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं यू पी शुड बी लेस देन
into L minus epsilon whole to the power m minus p, right? This implies up less than into L minus epsilon whole to the power m into L minus epsilon whole to the power minus p. तो L माइनस एप्सिलॉन होल टू द पावर m इंटू यू को हम लोग दूसरा एक टर्म लैम्डा से एज्यूम कर रहे हैं. लेट ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव. L माइनस एप्सिलॉन whole to the power m equal to lambda and L minus epsilon equal to r, then up क्या मिल रहा है? up लेस देन लैम्डा इंटू r टू द पावर माइनस p. ठीक है, वेर r इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन. ये तो पहले ही एज्यूम कर चुके. तो राइट हैंड साइड में जो मिल रहा है ये एक इन्फिनिट जीपी है और इसका जो कॉमन रेशियो दैट इज लेस देन 1. बट द सीरीज summation of r to the power minus p is a series of gp with common ratio 1 by r that is less than 1, क्योंकि r greater than 1 है तो 1 by r should be less than 1. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इट इज कॉन्वर्जेंट. ठीक है, तो कॉन्वर्जेंट होगा देन समेशन ऑफ यूपी इज आल्सो कॉन्वर्जेंट. hence summation of r to the power minus p is convergent thus summation of u to the un is also convergent. ठीक है, ये कॉन्वर्जेंट हो गया. नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे फॉर जो एल है, एल का वैल्यू जब लेस देन 1 है देन इट इज डाइवर्जेंट. ये प्रूव करेंगे. सेकेंड पार्ट नंबर 2, लेट L लेस देन 1. सेम तरीके से हम लोग एप्सिलॉन एज्यूम करेंगे. वी चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that L plus epsilon less than 1, right? L plus epsilon less than 1 and L plus epsilon को हम लोग k से डिनोट कर रहे हैं. L plus epsilon equal to k that is less than 1, right? Since limit n tends to infinity, un by un plus 1 equal to L, and this implies mod of un by un plus 1 minus L less than epsilon for all values of n greater than m. m एक नंबर कंसीडर किए, उससे भी m लार्ज नंबर है, उससे भी ज़्यादा है तब ये सेटिस्फाई होगा. देन इट इज लिमिट. तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो वी हैव दिस implies L minus epsilon less than un by un plus 1 less than L plus. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का प्रूफ है. तो उसमें हम लोग क्या किए थे? फर्स्ट इनइक्वालिटी कंसीडर किए थे, इसमें सेकेंड इनइक्वालिटी एंड टेकिंग सेकेंड इनइक्वालिटी
second, taking second inequality and putting n इक्वल टू n के जगह पे क्या पुट किए थे m, उसके बाद m+1 एंड सो ऑन, लास्ट में p-1 तक, है ना। ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेशन में चेंज है। p-1 वी हैव क्या मिलेगा, um/um+1 लेस देन l+epsilon। नेक्स्ट um+1 divided by um+2 less than l+epsilon and so on, लास्ट में up-1 by up less than l+epsilon, right? तो मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स वी हैव सेम एकदम तरीके से हम लोगों को मिलेगा, मल्टीप्लाइंग the corresponding terms we have, तो सिंप्लीफाई करके मिलेगा um डिवाइडेड बाई up लेस देन l+epsilon होल टू द पावर m p-m, राइट, p-m। तो इसमें मिलेगा up ग्रेटर देन um इंटू l+epsilon इंटू m टू द पावर m-p। उसको थोड़ा चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, दिस ग्रेटर देन, दिस इम्प्लाइज up ग्रेटर देन um इंटू l+epsilon होल टू द पावर m इंटू l+epsilon होल टू द पावर -p। तो um इंटू l+epsilon होल टू द पावर m, इसको एक दूसरा टर्म से एज्यूम कर लेंगे, सपोज अल्फा। लेट um into l+epsilon whole to the power m equal to alpha. This implies up greater than alpha into l+epsilon मतलब क्या है, k to the power -p, right? the k to the power, ये जो सीरीज है k का वैल्यू क्या है, एक से k जो है लेस देन 1 है, तो 1/k ग्रेटर देन 1 है। नाउ summation of k to the power -p is a GP series with 1/k that is greater than 1। इसका मतलब k to the power -p is divergent, right? This implies summation of k to the power -p is divergent, hence summation of un is also divergent, right? is also divergent। नेक्स्ट जो है, जब l का वैल्यू 1 है, राइट, तब क्या होगा, तो टेस्ट फेल, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। केस 3 the test fail for l equal to 1। now limit n tends to infinity, un by un+1 equal to 1। we can neither definitely assert that a certain stage un is less than or positive quantity और ग्रेटर देन, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको हम लोग एज्यूम, मैंने कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते, राइट। इसको एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इन बोथ केस un
by un plus 1 always tends to 1, the test fail. हाँ, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे. We cannot, we can, sorry, here we can neither definitely assert that after a certain stage un by un plus 1 is less than a positive quantity which itself less than 1, which itself less than 1, which itself less than 1, nor can be definitely sorry, nor can be definitely assert that un by un plus 1 is greater than 1. ठीक है, hence proved, hence test fail. ठीक है, तो यही थ्योरम कंप्लीट हो गया. मतलब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम लोग ये प्रूव किए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 का लिमिटिंग वैल्यू सपोज l है, तो व्हेन l greater than 1 series is convergent, l less than 1 or equal to 1, less than 1 then series is divergent, and when l equal to 1 the test fail.